Okay, everyone. So I believe we are live. We are live back again. And I am clearly visible and audible to all of you. Hello, everyone. Hello, Aditya. How are you? I hope everything is good at your end. So can you all please quickly confirm if I am clearly visible and audible to each and every one of you? Basant, Preeti, Ricky. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Okay, yes. Okay, right. So, Aditya, I'm good. Thank you very much for asking. So, friends, welcome back once again to our fifth lecture. Fifth lecture for the preparation of LR and data interpretation, LR and DI, in the sections like in the examination for the preparation for IPMAT. IPMAT Indore, IPMAT Rohtak, and JIPMAT. Right. So friends, welcome back once again on your favorite YouTube channel, IPMAT Wallah. And here we are to prepare you, to help you prepare for IPMAT examinations. So in front of us in the next 2 months, we have three big examinations to write. We'll be starting with JIPMAT, which is scheduled on 26th of April, and then followed by the other two examinations, IPMAT Indore and IPMAT Rohtak. Okay, so Nandini, you're saying you have a doubt. Please go ahead, yaar. You don't have to ask me to ask a doubt. Okay, you don't have to ask for permission. Okay, good evening, Vedantam. Ricky, you also have a doubt. Perfect, good yaar, अच्छा है. Sir, LRDI is only needed for JIPMAT और IPMAT. अद्रिक, ये डाउट मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ. So I have decided this as an agenda. तो ये डाउट मैं बहुत अच्छी तरह अभी क्लियर करने वाला हूँ. सर आई एम रांची का अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा. यस यस, यू विल हैव टू अपीयर. देखो, एक मैं छोटी सी चीज बताता हूँ. There are some IIMs which will be conducting their own examination, right? The other IIMs which are offering IPMAT, IPM program, integrated program in management, if they are not conducting their examination, separate examination, then they will be using the score of any other examination, right? ऐसा होगा. But how will IIM Ranchi get to know that you want to apply to IIM Ranchi? Okay, so you will have to apply separately for IIM Ranchi, right? So ये अप्लाई करना पड़ेगा एंड वेट फॉर द नोटिफिकेशन. जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, वी विल बी द फर्स्ट टू हेल्प यू आउट, टू इन्फॉर्म यू अबाउट ऑल दोस थिंग्स. ओके, अद्रिक, जो आपका डाउट है ये यूनिवर्सल सा डाउट है, तो आई विल बी कवरिंग अप. ओके सर, मेरा अभी तक एसडीओ लेवल का नहीं है का सर्टिफिकेट. ओके ओके, एंड मैं ओबीसी कैटेगरी से हूं और आईपीमैट इंदौर में लास्ट डेट तक भी मेरा नहीं बन पाएगा, तो कैसे आईपीमैट. सो रिकी देखो, इफ यू बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी एंड यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसका, तो अब आप सर्टिफिकेट, आप बोल रहे हो कि एग्जाम तक या उसके बाद तक आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाओगे. ओके, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सर्टिफिकेट ये प्रूफ देना होता है दैट वी बिलोंग टू अ सर्टेन कैटेगरी, राइट? तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कोई बिना प्रूफ के तो नहीं मानेगा, बिना सर्टिफिकेट के तो नहीं मानेगा. इन दैट केस यू कैन अप्लाई थ्रू जनरल कैटेगरी. अब यही कर सकते हैं, राइट? एंड यू विल बी एबल टू एटलीस्ट राइट द एग्जाम. एग्जाम तो दे पाओगे. गुड इवनिंग शाया. बसंत सर, आई एम रांची का फॉर्म कब? बसंत, अभी ये तो मैं नहीं बता सकता माय डियर फ्रेंड, बट like in the upcoming days we are expecting the form to be out. Okay, so you can what you can do is every 2 or 3 days बाद IIM रांची की वेबसाइट चेक कर सकते हो, या फिर भूल जाओ, अगर आप YouTube पे हमारे चैनल पे रेगुलर हो ना, तो जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आएगा किसी भी IIM का, कोई भी कुछ भी हैपनिंग होगी इवेंट, तो हम आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है सर, मैं रजिस्ट्रेशन तक प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एग्जाम देने से पहले प्रोवाइड कर सकता हूं. बट रिकी, अगर आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है ना, अगर आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है और आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. हम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे. ओके,
चलिए, so friends, I'll be taking these doubts towards the end of this session, but आज का जो एजेंडा है उसको देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये कौन कौन से आईपी मैट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, बोथ ऑफ देम। ओके, नाउ लॉजिकल रीजनिंग and data interpretation is important from the point of view of IIM Rohtak and JIPMAT definitely, okay, दोनों के point of view से important है, right? Because इन दोनों ही examination में logical reasoning, data interpretation का अलग से section आता है, right? Now data interpretation is one thing, ये जो आज हम करने वाले हैं, आज थोड़ी सी हम इसकी झलक देखेंगे data interpretation की, but data interpretation is one thing that you might find this particular questions in the QA section as well, okay? And in IIM Indore, IPMAT Indore examination, though you don't have a separate section for logical reasoning and data interpretation, but every year 5 questions are asked either from logical reasoning or data interpretation, right, in the QA section, okay? So LR and DI both are important from the point of view of Rohtak and JIPMAT, definitely ये तो clarified है ही, but logical reasoning या फिर data interpretation के 5 क्वेश्चन का एक सेट हर बार IIM इंदौर के QA सेक्शन में पूछा जाता है, okay? So pick up the papers of last 5 years, okay? So in some cases you will find last 5 questions of logical reasoning, in some cases you will find last 5 questions of data interpretation, right? So logical reasoning, data interpretation, जो अभी तक कुछ students यही सोचते हैं कि भाई IPMAT इंदौर के एग्जाम में नहीं आता, then they are mistaken. Yes, this particular thing, logical reasoning, data interpretation, any one of these two will be tested in, अब ये हमें पता नहीं है कि अभी आने वाले एग्जामिनेशन में IPMAT इंदौर 2025 में लॉजिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे या डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे, बट इफ यू लुक एट लास्ट 5 to 6 years, then definitely last 5 questions, a single set of 5 questions is asked either on logical reasoning or on data interpretation, right? So ये डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया है, जिसका भी ये डाउट था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आज का जो एजेंडा है उसको कवर अप करते हैं, एंड देन जो भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आई विल बी आंसरिंग टू दोस क्वेरीज टुवर्ड्स द एंड। तो पहले आज का एजेंडा कवर अप करते हैं, राइट? नाउ बिफोर स्टार्टिंग, दीज आर सम स्पेशल ऑफर्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट येट द पार्ट ऑफ IPMAT वाला फैमिली, हु आर नॉट पार्ट ऑफ आवर फैमिली, जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है एंड दे आर लुकिंग फॉर एनी ऑफ द बैचेस। सो फ्रेंड्स, विश्वास दिवस के ऑफर में, विश्वास दिवस के like occasion पे we have some brilliant offers for all of you. These are some special offers. So we have these offers on these 3 courses. So IPMAT Master Quest 3.0 2025, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 7,999, now it is available at an offer price of 1,999, right? So 8,000 से 2,000, a discount of 75%. So you can avail this one. IPMAT Pro 2025, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 9,999, now it is available at 4,499. And finally, our upcoming batch IPMAT Crash Course, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 4,999, now it is available at 1,999. All right, so you all can avail any of these offers, and these offers are only up till 10th of March. So quickly hurry up and join any of these batches. All right, okay. चलिए, so data interpretation start करते हैं। तो पहले हम कुछ टाइम बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन पे स्पेंड करेंगे, एंड देन आज की क्लास में एक कंप्लीट सेट सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, राइट? नाउ देयर आर सम प्री रिक्विजिट्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। प्री रिक्विजिट्स का मतलब क्या है? आपको ये चीजें ना पहले से ही प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, ओके? These are not a part of data interpretation, they are used in data interpretation.
These are the part of quantitative aptitude. Quantitative aptitude तो पता है ना? So these are the part of quantitative aptitude, but they are completely applicable in this section in data interpretation, right? So first of all, prerequisites. So calculation strong करने से पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी. So in quant, you must have studied a topic of percentages. Right? Percentages and its applications in profit and loss. Right? So percentages, profit and loss, अगर ये topic आपका strong है, then you will be easily able to sail through in data interpretation. Okay? Second thing is ratios and averages. नाउ रेशियोज एंड एवरेजेस के कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, ओके, एंड बहुत ज्यादा डीप कंसेप्ट्स यूज नहीं होते, बट रेशियोज एंड एवरेजेस की थोड़ी बहुत एप्लीकेशन आपको समझ में आनी चाहिए, एंड दीज विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज्ड इन द क्वेश्चंस while you will be solving the questions based on data interpretation, right? So quant के ये दो चैप्टर्स हैं, quantitative aptitude के ये दो चैप्टर्स हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर करने पड़ेंगे. You should be strong at all these things. Okay, now next thing comes up is calculations. So calculations में multiplications, divisions, ये तो calculations आपको strong करनी पड़ेंगी, but you must remember the squares of first 25 numbers and you must remember the cubes of first 15 numbers. Squares of first 25 numbers and cubes of first 15 numbers ये prepare करने हैं. Next thing is percentage equivalent of fractions. Percentage equivalence of fractions. Now this is very important thing that will save plenty of time for all of you in the questions of data interpretation. अब ये होता क्या है percentage equivalence of fractions? So I'll give you a fraction, let's say 1 by 2. Now half of anything will be what percentage of that thing? Come on, give me an answer for this. So किसी भी चीज का half calculate करना है तो वो कितना percentage होगा? Can you write it in the chat box, all of you? Absolutely, Ishan. So it will be 50%, right? तो percentage equivalence of fractions. So 1 by 2 का percentage equivalent कितना होगा? It will be 50%. Similarly, tell me the percentage equivalent for 1 by 3. All of you, go ahead. 1 by 3 का percentage equivalent कितना होगा? Absolutely, Ricky. Good. So it will be 33.33%. So likewise, you must remember the percentage equivalence of fractions up till 1 by 20. So 1 by 20, 1 by 15 तक के याद कर लो, ठीक है? पहले 1 by 15 तक का टारगेट बनाओ and then increase it up till 1 by 20. So 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and so on up till 1 by 20. अगर percentage equivalence of fractions याद होंगे तो बहुत easy हो जाएगा. Now I'll give you some frequently used percentage equivalence of fractions जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, so वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. So 1 by 2 is 50%, 1 by 4 25%, 1 by 8 is very important. So 1 by 8 का can you tell me the answer? Meanwhile I'm writing the others. 1 by 3 आप ऑलरेडी बता चुके हो मुझे, 33.33%. Then 1 by 6, 1 by 6 is frequently used. So 1 by 8 का अभी तक आंसर नहीं लिखा है किसी ने भी. So yes people, 1 by 8, absolutely good. So I can see that there are handful of students who are active in this class. I want each and every one of you to be active. Come on guys, क्या कर रहे हो यार? बहुत बेसिक चीजें हैं. अगर 1 by 4 का इक्विवेलेंट 25% है, चलो इससे नहीं, इससे पहले वाले से स्टार्ट करते हैं. 1 by 2 का इक्विवेलेंट 50% है, तो 1 by 2 को अगर मैंने हाफ कर दिया तो 1 by 4 बन जाएगा. तो 50 को भी हाफ कर दो, 50 का हाफ हो जाता है 25. ठीक है? अब 1 by 4 से 1 by 8 पे चलते हैं. तो 1 by 4 से 1 by 8 पे अगर जाते हैं तो अगेन हमने क्या किया है, हाफ ऑफ 1 by 4 is 1 by 8. तो 25 का हाफ कितना होता है? 12.5.
So you can say that 1 by 8 will be 12.5 percentage. All right. Okay. Now 1 by 6 मैंने यहाँ पे incomplete छोड़ दिया है, तो सेम चीज जो आपने ऊपर किया था वो यहाँ पे भी कर सकते हो. 1 by 3 का परसेंटेज इक्विवेलेंट पता है, उसको हाफ कर दिया तो 1 by 6 का पता लग जाएगा, राइट? तो इट विल बी 16.66 परसेंटेज और 16.67 परसेंटेज, right? 16.66, 16.67, it's one and the same thing. Similarly, 1 by 9. So 1 by 9 का ऑब्टेन करने के लिए क्या करो? 1 by 3 का 1/3 कर दो, 3 से डिवाइड कर दो इसे. So 1 by 3 when divided by 3. So 33.33 when divided by 3. You can tell me the answer. Come on, go ahead. Absolutely. 11.11. Okay, right? And then 1 by 9 के साथ 1 by 11 का याद कर सकते हो. अब यहाँ पे थोड़ा सा ना रटने का तरीका यूज किया मैंने. कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे. Now 1 by 9 में 11 यूज हो रहा है, 11.11, राइट? तो 1 by 11 में 9 यूज हो जाएगा and it is 9.09 परसेंटेज. कोई लॉजिक नहीं है इसका, ठीक है? सिर्फ एक रटने का तरीका है. 9 में 11 यूज हुआ है तो 11 में 9 यूज हो गया. ओके, राइट? So Aditya, yes, 9.09, you are absolutely correct. Okay, perfect. So likewise, there are some other percentage equivalents of fractions, but these fractions, these percentage equivalents of fractions are frequently used in the questions. Okay, अब ये जो percentage equivalents of fraction है आपको quant में भी बताया गया होगा, and quant के questions में तो percentages के questions में profit and loss, simple interest, compound interest, जो भी application of percentages वाली चीजें हैं वहां पे ये परसेंटेज ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शंस ये बहुत हेल्पफुल होंगे टाइम सेव करने में. परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, लाइक प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, इस टाइप के क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप ये परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में अगर कन्वर्ट कर दो तो कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाती है. ओके, राइट? सो दीज आर सम फ्रैक्शंस व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. ऑल्सो multiples of these are also used. So अगर 1 by 8 को पकड़ लेते हैं, okay? So 1 by 8 we know that it is 12.5 percentage. तो एक जो fraction है 3 by 8 which is third multiple of this, 3 by 8 can be obtained by multiplying this by 3. Okay? So 12.5 को 3 से multiply करेंगे हमें result पता लग जाएगा. Okay, so 1 by 8 is 12.5, 3 by 8 will be 12.5 multiplied by 3, that is 37.5 percentage, right? Similarly, 5 by 8 is 62.5 percentage, fifth multiple of this. Similarly, 7 by 8, seventh multiple of this is 87.5 percentage, right? 87.5 percentage. I have access to IPMAT Pro Batch and I am a new student of IPMAT. So can I continue studying from Pro Batch in these 2 months from zero? Yes, Harsh, yes, definitely you can do that. Okay. Now moving ahead, multiples of this 1 by 11 given है तो 2 by 11 हो जाएगा 18.18, 3 by 11 हो जाएगा 27.27 and so on. ठीक है? तो just keep all these things at the back of your mind कि भाई अगर मुझे 1 by 8 पता है तो उसके मल्टीपल्स भी पता होने चाहिए. 1 by 9, 1 by 11, 1 by 3 ये सब चीजें पता है तो इनके मल्टीपल्स भी पता होने चाहिए. They will be extremely useful. Okay, right? Harsh, I have just given answer to your question. Okay, yes, you can do that. Okay, so friends, these are some things, prerequisites that you need for data interpretation. अब data interpretation के questions का format क्या होता है? तो सबसे पहले तो कुछ डेटा दिया होता है, मैथमेटिकल डेटा गिवन होता है. सो लॉट्स ऑफ नंबर्स विल बी गिवन टू यू. नाउ दीज नंबर्स कैन बी इन साइड अ टेबल, एक टेबल में हो सकते हैं, और द डेटा कैन बी गिवन टू यू इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन चार्ट. इट कैन बी गिवन टू यू इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स. ओके, नाउ आफ्टर दिस दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन डेटा. ओके, अब अगर टेबल गिवन है तो टेबल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? सो लेट्स से क्वेश्चन में गिवन है पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट कंट्रीज इन 4 डिफरेंट ईयर्स, राइट? सो इंडिया,
चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, सो इन 5 कंट्रीज का 4 इयर्स में 2021, 22, 23, 24 में इनकी पॉपुलेशन गिवन है, राइट? सो 5 कंट्रीज एंड 4 इयर्स, दैट मींस यू विल बी गिवन 20 नंबर्स। हर एक कंट्री की पॉपुलेशन 4 इयर्स में है, तो 5 कंट्रीज, 5 into 4, 20 नंबर्स गिवन है आपको। नाउ दे विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द परसेंटेजेस। They may say that what is the percentage increase in the population of India from 2021 to 2023, right? तो percentages apply हो जाएगा। They may ask you question based on ratios. So they may ask you what is the ratio of the population of China in 2022 with the population of Australia in 2024, right? तो ratios apply हो गया। They may ask you questions on averages. Averages, they'll ask you what is the average population of all these 5 countries in 2022. So 2022 में 5 numbers हैं आपके पास, इनका average निकालना है, right? So that's why I'm saying that first of all percentages तो बहुत ज्यादा important है ही, इनको तो deep में आपको study करना है, prepare करना है। Secondly, ratios and averages के basic concepts पता होने चाहिए, कहीं अटक ना जाओ कि भाई रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? सो दिस मच इज रिक्वायर्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन। बट रेशियोज एंड एवरेजेस तो आपको क्वांट के लिए भी प्रिपेयर करना ही है, बिकॉज क्वांट इज वन थिंग दैट इज टेस्टेड completely in all the 3 examinations that you are preparing for, all the 3 IPMAT examination, right? ठीक है, तो ये तो हो गए थोड़े बहुत बेसिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? So all of you ready for the question? So I'll first of all display the set, the data required. So this is a set that is in the form of bar graph. हाँ, तो आज हम देखते हैं कि बार ग्राफ को भाई रीड कैसे किया जाता है। जनरली बार ग्राफ में 2 एक्सेस होते हैं, x एक्सेस एंड y एक्सेस। ओके, x एक्सेस में इसमें 2012, 13, 14, 15 एंड 16 5 years. So this bar graph is self-explanatory. इसके आसपास कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं है, बोला हुआ है रेफर टू द बार चार्ट बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, तो बार चार्ट को रेफर करते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लीविंग इट ऑन यू फॉर 30 seconds and tell me yes or no, are you able to understand this bar graph? Are you able to pick up the values from this bar graph? वैल्यू उठा पा रहे हो बार ग्राफ में से? थोड़ा सा शेड में प्रॉब्लम है, बस इज दिस वन। ओके, तो मैं यहां पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो मेट्रो को ये चीज कर दो ब्लू कलर से। सो दिस इज मेट्रो, दिस इज मेट्रो, दिस इज मेट्रो, सीक्वेंस में दिस इज मेट्रो एंड दिस इज मेट्रो। ओके, राइट? सो उन्नति प्रोबेबली आपको प्रॉपरली यहां पे विजिबल नहीं होगा, ठीक है, मैं प्रॉपर शेडिंग नहीं कर पाया, रियली सॉरी फॉर दैट। बट जनरली क्या होता है, ये सीक्वेंस में होता है, बस मेट्रो एयरलाइंस, बस मेट्रो एयरलाइंस, बस मेट्रो एयरलाइंस एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली। ओके, सो नीरज एंड रिकी सेज यस दे आर एबल टू फेच वैल्यूज। मेरे को बस यही पता करना है कि भाई आप वैल्यूज निकाल पा रहे हो यहां से। आर यू एबल टू फेच वैल्यूज फ्रॉम दिस बार ग्राफ? Sir, I'm in 11th commerce Gujarati medium, so does this limit to me? No, 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 Vatsal, not at all यार, गुजराती मीडियम है तो क्या फर्क पड़ता है? ओके,
आई नो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जिन्होंने स्टडी की हैं, ओके, बट नन ऑफ देम फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है ना? तो गुजराती मीडियम में हो दैट लाइक ये तो कोई वैलिड क्वेश्चन है ही नहीं यार तुम्हारा। यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल एंड यू कैन इजीली क्लियर दिस एग्जामिनेशन। पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। ओके चलिए, सो एक बार डेटा एनालाइज करते हैं। सो कम ऑन ऑल ऑफ यू, गिव मी द वैल्यू ऑफ मेट्रो इन 2013। सो मेरे को चाहिए मेट्रो की वैल्यू 2013। जल्दी से क्या नंबर होगा मेट्रो इन 2013? ऑलराइट, नाइस। तो आपको करना क्या है, बार ग्राफ को उठाओ एंड उसकी प्रोजेक्शन देखो वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस से प्रोजेक्शन देखनी है। सो मेट्रो इन 2013 विल बी दिस वन, जो मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया है। अब इसकी अगर प्रोजेक्शन देखेंगे ऑन वाई एक्सिस, सो इट इज हियर 50, सो द वैल्यू इज 50, राइट? सो आई बिलीव नीरज इट्स नॉट 15 भाई, 50 मेट्रो, मेट्रो इन 2013। मैंने एयरलाइंस नहीं पूछा था, आप एयरलाइंस का वैल्यू बता रहे हो। ओके, आई थिंक यू आर गिविंग आंसर टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। सो 50 इज द वैल्यू। नेक्स्ट, टेल मी द वैल्यू ऑफ एयरलाइन इन 2012। एयरलाइन इन 2012 का वैल्यू चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया। अब यहां पे जो मेट्रो का वैल्यू था 50, ये तो एग्जैक्टली इस नंबर पे आ रहा था, बट एयरलाइन इन 2012 दिस इज कमिंग एग्जैक्टली बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच में आ रहा है। ओके, राइट? सो दिस वन विल बी 15। Now Shaya 14 plus 1, nice, good answer. So this value is 15 because this is in between 10 and 20. ठीक है? So as far as picking up the values is concerned, there is no problem at all. Okay? So let's move on to the questions one by one. एक एक करके questions पे चलते हैं। तो मैं सारे questions एक साथ display नहीं कर रहा हूं। I have all these questions one by one with a graph given. So you have 1 minute. You have 1 minute to solve this question. So read the question and find out the answer. In 2015, airline passengers represented what percentage of all passengers on buses, metro, and airlines in that year? Option A, B, C, or D. This is how you will have to post your answer. Vatsal, my suggestion will be to wait for upcoming years batch. ठीक है? Also, like logical decision will be to wait for 2026 batch, but let's say Vatsal, if you have time right now and you want to start your preparation and you don't want to sit idle, खाली नहीं बैठना तुम्हें, ठीक है? Then in that case you can join any of these programs. Crash batch join कर सकते हो, ठीक है? Pro join कर सकते हो, कोई भी batch join कर लो, ठीक है? And start watching all the lectures. And as soon as 2026 batch for IPMAT is launched, you can start preparing with that batch. Okay? Ayush, like I don't agree to that. ठीक है? So yes, it is worth applying. Okay? I think you need one seat. एक ही सीट चाहिए ना तुम्हें? तो एक सीट तो अवेलेबल है डेफिनेटली। चलो, now in 2015, they are talking about the year 2015. एयरलाइन पैसेंजर, तो पहले एयरलाइन कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? या फिर तीनों ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बस, मेट्रो एंड ट्रेन। सॉरी, ट्रेन नहीं, एयरलाइंस। मैं ट्रेन में बैठ गया हूं।
Okay. So airlines, bus, metro, and airlines. So can you give me all the three numbers separately? Meanwhile, I'm calculating them. Meanwhile, I'm writing. Bus कितना है, metro कितना है, airline कितना है for the year 2015. So 2015, bus is 60, metro is 60, and airline is 20. This is what I believe. तो 60, 60 and 20. Pranav, yes, हम दोनों के आंसर्स मैच हो रहे हैं. Now they want airline is what percentage of all the passengers in that year. So airline कितने passengers हैं? 20 is what percentage of this combined? So 20 is what percentage of 60 plus 60 plus 20? 20 is what percentage of 140? 20 is what percentage of 140? अब जनरली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं. मैं मल्टीप्लाई 100 नहीं करता. रीजन, आई प्ले विद फ्रैक्शंस. 0 से 0 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे. 2/14 इज 1/7. ना अगर आपको 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शन पता है, देन यू कैन सेव दिस टाइम while doing calculations. Calculations की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो मुझे याद है कि 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 14.28, right? So 14.28, option D is the correct answer of this question. All right, ठीक है. So a lot of you are giving the answer, and yes, option D is absolutely correct for all of you. सो आयुष, दैट मस्ट बी द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री. ठीक है ना. लास्ट ईयर अगर आपको ये लगता है कि मेल जनरल कैंडिडेट को कोई भी सीट नहीं दी थी फाइनल एडमिशन के लिए, तो उसकी वजह से इस साल भी आप अप्लाई नहीं करोगे मेल जनरल. सो दैट इज नॉट फेयर. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग. जिपमैट एग्जाम देना है, जरूर देना है. ठीक है. ओके. सो 1/7, 14.28 is the correct answer. We are able to use calculator in IPMAT, right? IPMAT इंदौर में कैलकुलेटर होता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The number of airline passengers in 2014 was approximately how many lakhs fewer than the number of metro passengers in 2013? सो आदित्य, यस आप बिल्कुल सही हो कि अच्छा नहीं, यू आर आस्किंग. सो यस, आईपीमैट में कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है. बट आदित्य एक चीज बता, 1/7, ये जो पिछला वाला फ्रैक्शन था 1/7, अब आप कैलकुलेटर, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर ओपन करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 7 लिखोगे. मैं बोल रहा हूं 1/7 मुझे पता ही है 14.28 होता है. ठीक है. तो कैलकुलेटर से भी फास्ट हो गया ना यार ये तो वाई टू इवन ओपन द कैलकुलेटर अगर आपको ये सब चीजें पता है. वत्सल, आईपीमैट 2026 का बैच अभी थोड़ा टाइम लगेगा. आईपीमैट 2025 के बैचेस खत्म होने के बाद वो बैच लॉन्च होगा. ठीक है. चलिए, द नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014, नंबर ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स इन 2014, ये कैलकुलेट करते हैं. 2014 में एयरलाइन पैसेंजर्स कितने हैं? 20. Careful, and this data is in 10,000s, right? So whatever value you will pick from the graph, उसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे. यहां पे लिखा हुआ है ग्राफ में, so passengers in 10,000s, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10,000 से. All right, so 2 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 zeros. All right, ठीक है. So airline 2014, it's done. Next is metro in 2013. So metro 2013, number of passengers. So metro middle वाला है 2013, it is 50. So 50 multiplied by 10,000. All right, so this will become 5 lakhs. All right,
Now we'll have to find out the difference between them. 2 lakhs and 5 lakhs. It is 3 lakhs. So 3 lakhs का difference है and they are asking the difference in lakhs. Okay. So that means मेरा answer क्या होगा? It will be 3. That is option D. Okay. So नीरज option A answer नहीं होगा my dear friend. हमें lakhs में answer देना है. तो first value is 2 lakhs, second value is 5 lakhs. The difference between them will be 3 lakhs. All right. So come on, tell me, जिसने भी आंसर ऑप्शन ए दिया है या फिर if your answer is wrong, are you able to understand what has happened here? Approximately you're asking, so it must start somewhere in the month of June or July. ठीक है? Yes, उन्नति हो गए कंफ्यूज यूनिट्स में, तो यूनिट्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. ओके, सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस पार्ट. ये जो पार्ट था, पैसेंजर्स का वैल्यू दिया हुआ था इन 10,000. सो जो भी वैल्यू ऑब्टेन होगी उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करना है. आप लोगों ने क्या किया, 20 उठाया और 50 उठाया और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर दिया, जो नहीं करना है. In how many lakhs? Okay, so whenever they are saying this thing, so look for the units in the graph. Okay, chaliye next question. If the average bus fare per passenger was rupees 10 and the average airline fare per passenger was 5,000 in 2016, then the ratio of total fare of airline passengers to the total fare of bus passengers was approximately which one of the following options? Aditya, yes. Aditya, I know hundreds of students from the past जिन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद IPMAT की प्रिपरेशन शुरू की. दे हैड 1 month, 2 months, right? Definitely less than 2 months, and they are sitting in IIM Indore, IIM Rohtak, all right? And like this has not happened for a few students, this has happened for a lot of students. ठीक है? तो just have some confidence on yourself, prepare, give your 100%. मस्ती नहीं करनी है फॉर द नेक्स्ट 1.5 months, whatever time is remaining. मस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, डेडिकेटेड स्टडीज करनी है, फोकस्ड स्टडीज करनी है, and you will be able to get through. All right, Pranav is the first one to answer. Good, Pranav. आदित्य, अभी तो आपको आई वुड से क्रैश बैच जो है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना चाहिए. ठीक है, देखो फ्रैंकली आई वुड हैव एडवाइज्ड यू फॉर द अदर बैच. प्रो बैच है, 3.0 बैच है, ठीक है, बट अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्रैश बैच डेफिनेटली ज्वाइन कर लो. ठीक है, अगर आप और ज्यादा थोड़ा टाइम निकाल सकते हो प्रिपरेशन के लिए तो प्रो बैच ज्वाइन कर लो. ठीक है, अदरवाइज गो फॉर क्रैश बैच एंड यू विल बी गेटिंग ऑल लाइव क्लासेस. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एवरेज, सो कौन से ईयर की बात हो रही है? सबसे पहले 2016 की बात हो रही है. ठीक है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट बस. सो बस में नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं? सो इन बस नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज 60 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, राइट? And average bus fare is rupees 10. So total fare collected will be number of passengers multiplied by the fare per passenger. Okay, so number of passengers कितने हैं? 60 multiplied by 10,000 multiplied by 10 will give you the total fare that is collected from the bus. All right, this is one thing. Second thing, we'll have to do it for the same year फॉर एयरलाइन. ठीक है ना? सो एयरलाइन नंबर ऑफ पैसेंजर्स देख लेते हैं पहले. सो नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने हैं? 20 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 एंड एवरेज फेयर फॉर एवरी पैसेंजर इज
5,000 rupees. So this will be the total fare for airlines. Simple. Now आपको क्या करना है, इस चीज का रेशियो फाइंड आउट करना है. देन द रेशियो ऑफ द टोटल फेयर फॉर एयरलाइन टू दैट ऑफ बस. अब ये चालाकी की है इन्होंने, ठीक है. सो ऑप्शंस भी देखो, 50/3, 3/50, 500/3, 3/500. सो ये चालाकी की है इन्होंने. फर्स्ट लाइन में बस और एयरलाइंस दिया है, एंड सेकेंड लाइन में जो पूछा है वो एयरलाइन एंड बस, ठीक है ना. तो अभी हम बस और एयरलाइन का रेशियो निकालते हैं, बट आंसर देते वक्त हमें केयरफुल रहना है. ओके. सो 60 एंड 20 3 कैंसिल हो जाएगा, 10,000 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 एंड 0 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये रेशियो आएगा बस अपॉन एयरलाइन का 3/500. बट before you mark 3/500 as the answer, be careful about the last line in which they have given that airline is to bus का आंसर चाहिए. So bus is to airline नहीं, airline is to bus. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 500/3, which is option C. ओके. हम बहुत इजीली गलत आंसर मार्क कर सकते हैं, ये नहीं करना है. यू हैव टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस. डन. ठीक है ना दोस्तों. चलो आगे चलते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन बचा है. यस, एक और क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड देन वी विल स्टॉप. बसंत नहीं, आईपीएम में डीआई का लेवल रेज होगा. ये बहुत बेसिक क्लासेस हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको डेटा इंटरप्रिटेशन पता भी नहीं है. आगे जो हम आगे क्लासेस लेंगे उसमें स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे. देखो, फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस, आईपीमैट लेवल क्वेश्चंस नहीं करा सकता ना, आप सबके सर के ऊपर से चला जाएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ बेसिक वन. सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इससे थोड़ा हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी पूछा जाता है आईपीमैट में, डेफिनेटली. नाउ वन ऑफ द स्टूडेंट्स आस्किंग कि बोर्ड्स एग्जाम्स के बाद, अभी बोर्ड्स चल रहे हैं तो उसके बाद कैसे प्रिपेयर करें. तो दोस्त, आपको क्या करना चाहिए, आईपीमैट क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं अभी कुछ ही दिन में, तो आपको वो बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए, यूजिंग विच यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आईपीमैट एग्जामिनेशन. चलिए, सो लेट्स फिनिश दिस वन. What is the percentage increase in passengers traveling by bus, metro, airways from 2012 to 2016? So 2012 में तीनों टाइप के पैसेंजर्स कैलकुलेट करेंगे. So 2012, let's see कितने पैसेंजर्स हैं टोटल. So 2012 50, 60 and 15. 50 plus 60 plus 15. Meanwhile, I'm calculating the sum. Can you tell me 2016 के टोटल पैसेंजर्स कितने हैं? राइट. सो 2016, what is the total passengers? Quickly tell me. So 50 and 60, 110, 120, 125 is the total for 2012. Right? Similarly, 2016, it is 60, 70 and 20. 60, 70 and 20. I hope I have written it correctly. So it is 150, right? So 2016, the value is 150. Now what they are asking? They are asking about the percentage increase. So percentage increase का formula क्या होता है? So percentage increase is equal to increase upon initial value multiplied by 100. ओके. तो चेंज कितने का आया है? 125 से 150, 25 का इंक्रीज हुआ है ओवर द इनिशियल वैल्यू ऑफ 125. इनटू 100 मैं लिखता ही नहीं, बिकॉज आई प्ले विद फ्रैक्शंस, मैं पहले ही बोल चुका हूं. सो 125 डिनोमिनेटर में है, 25 न्यूमरेटर में है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/5 आ जाएगा. 1/5 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 20%. ओके, ये याद होना चाहिए. 20%, option A is the correct answer. Okay, so Pranav, Shaya, that's it. दो स्टूडेंट्स ने
ऑप्शन ए करेक्ट आंसर दिया है, दैट्स इट, बस 2 स्टूडेंट्स ने। ओके, ठीक है, सो दैट्स ऑल। द करेक्ट आंसर, yes, it was 20%. Now friends, before we'll end, again I'll repeat that the students who have been asking me about how to prepare, so विश्वास दिवस ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर है ये आप लोगों के लिए। तो जो हमारे बैचेस हैं IPMAT मास्टर क्वेस्ट 2025 3.0, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 7,999, नाउ इट इज अवेलेबल एट 1,999, वेरी मिनिमलिस्टिक प्राइस। IPMAT Pro 2025, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 9,999, it is now available at 4,499. Finally, the upcoming batch Crash Course 2025, जिसका ओरिजिनल प्राइस था 4,999, now available at 1,999. Right? So please go ahead and join any of these batches, avail any of these offers, because these offers are valid only up till 10th of March. Okay? अब ये जो 3 बैचेस हैं, डिफरेंस क्या है? तो गाइज वेबसाइट विजिट करो, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, what all are the inclusions, what are the features of these batches. तो ये आपको डेफिनेटली वेबसाइट पे इनका डिफरेंस मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। तो जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि प्रो ज्वाइन करें या कौन सा वाला बैच ज्वाइन करें, या फिर मैंने प्रो ज्वाइन किया है तो क्या करना चाहिए, तो आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। आप वेबसाइट पे जाओगे, कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए ये पता लग जाएगा। ऑलराइट, फाइन। सो फ्रेंड्स, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you very much for being a part of this session. Have a nice time. I'll see you again. Good night.